Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. ठीक है, आइए हम लोग प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारा मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ। जो परिवार के जन, हमारे भाई बंधु रिश्तेदार जो हमारे साथ सम्मिलित हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ उनको आने के लिए समय पर। और आप लोगों को सबों को यीशु सहाय और हैप्पी सैबथ। इस समय हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करने के पहले एक बाइबल से वचन पढ़ेंगे, जो कि मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। यशाया की पुस्तक 55 अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक पद पढ़ूंगी मैं आप लोगों के साथ में। आप भी खोल सकते हैं आइज़ाया 55 वर्स 6 to 8। यहाँ ऐसे लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी और अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ईश्वर को धन्यवाद हो इस वचन के लिए। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे छोटी सी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। कि जीवित महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए जब आपने हमें पारिवारिक रूप से एकत्रित होने में मदद अगुवाई किए हैं, और हम आपके वचन से परमेश्वर जब बांटते हैं हमें मदद अगुवाई करें। आपके वचनों को सुनते हैं, आपके गीतों को गाते हैं, और आपके वचन से परमेश्वर जो कुछ भी हम सीखते हैं हमें उसे अपने जीवन में ढालने में मदद अगुवाई करें। हम विनती करते हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ हमेशा बने रहे, हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा करें। ये सभी विनती प्रार्थना हम प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करें, सुने और ग्रहण करें, आमीन। इस समय मैं गाछिला ग्रुप को सॉन्ग सर्विस के लिए आगे आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Good evening and happy Sabbath to everybody. Good morning, happy birthday. I would like to welcome our first song. मैं आप सबों को स्वागत करना चाहती हूँ, और शनाया और सूजी की तरफ से खास करके सबसे पहला गीत हम लोग जो गाएंगे वो है प्यूरिफाई माय हार्ट। Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refined as fire. My heart's one desire is to be holy, set
set apart for you, my master, ready to do your will, ready to do your will. नेक्स्ट सॉन्ग, दूसरा गाना जो हम लोग सब मिल करके गाएंगे वो है यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सलाम, राजा होता है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सलाम, राजा होता है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सलाम, राजा होता है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम लोग और एक गीत गाएंगे और ये गाना इंग्लिश में होगा। यू आर माई स्ट्रेंथ व्हेन आई एम वीक। Strength when I am weak, you are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as the precious gift, Lord, to give up our dear truth. You are my all in all. Jesus,
करने से पहले हम लोग एक सूजी का गाना गाएंगे। वो गाना चाह रही है लेकिन हम लोग अपना गाना गा रहे थे। तो रोलिंग डाउन द जॉर्डन। Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Oh, Shania, do you want to go? Yes. Oh, Susie, do you want to go? Oh, Shania, do you want to go? Yes. Oh, Susie, do you want to go? Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Oh, boys, do you want to go? Yes. Oh, girls, do you want to go? Yes. Oh, Maya, do you want to go? Yes. Oh, Susie, do you want to go? Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Thank you everybody. Thank you for participating. मैं घाटशिला ग्रुप को धन्यवाद देती हूँ सुंदर गीतों के लिए। और मैंने आज सोचा नहीं था, एक बहुत विशेष चीज हुई है आज कि सूजी हम लोग के साथ में पूरा सॉन्ग सर्विस में खड़ी थी। वो इधर उधर भागती रहती है, लेकिन आज मुझे बहुत काफी खुशी हुआ कि वो पूरा खड़ी रही और उसने पूरा पार्टिसिपेशन उसने दिखाया और वो पूरा अच्छे से गाई। इसके लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस समय मैं आमंत्रित करती हूँ ओपनिंग प्रेयर के लिए मिसेस हेलेना टुडू माँ को, कि वो हम लोग के बीच में है और प्रार्थना हम लोग के लिए करेंगे। ओके, हैप्पी साबत टू यू ऑल। आज हम धन्यवादी हैं। अभी प्रेयर करेंगे सब हाथ को। हे हमारे स्वर्गवासी पिता, तुझको बहुत धन्यवाद देते हैं। तूने हमें सारी हफ्ता रक्षा रखवाली किया है और इस साबत का प्रारंभ में तू लाया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक प्रकार का जोखिम से बचाया और अभी जो कुछ सुनेंगे उसको अपने मनों में रखने सके और दूसरों को भी बतलाने सके। धन्यवाद हो सबों के लिए। हम लोग सब शुक्ल चंगा है और आज तू शुरुआत में लाया है। अभी तू मदद सहायता करेगे, स्वादूतों को भेज ताकि हमें रक्षा रखवाली करे और का सुंदर भोर को उठ करके तेरा स्तुति धन्यवाद दिन भर तेरे महिमा के लिए हम करने सके। शैतान के राह से बचाए रख, पाप गुनाहों को क्षमा कर। वचन के लिए हम धन्यवादी हैं। जो भी हमारे लिए तैयार की गई है उसको तो आशीष दे और सबों को, बच्चों को, बड़ों को और हम एजेड वाले सबको के लिए हम धन्यवादी हैं। तू हमारे रक्षा करेगा, हमें अगुवाई करेगा, हमारा सारे पाप गुनाहों को क्षमा करेगा। हम प्रार्थना करते हैं स्कूल वाले, अस्पताल वाले और जितना कोई प्रचार कर रहे हैं सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता उनकी सहायता करेगा, उनकी अगुवाई करेगा, उन्हें तो आशीष देगा। अभी हम प्रार्थना करते हैं देश के नेता जनों के लिए भी हो, ताकि हमें फ्रीडम देवे और तेरा स्तुति और तेरा धन्यवाद हम गा सकते हैं। तेरे लिए खड़े होकर तेरा आगमन के लिए हम भी तैयार होने सके और जब तो आए तेरे साथ हम सब स्वराज को प्रवेश करने सके। और क्या प्रार्थना करेंगे तू जानता है। हमें साबत का आशीष से परिपूर्ण कर, यीशु मसीह के नाम से दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन।
आमेन। धन्यवाद देते हैं माँ को। इस समय हम लोगों के बीच में एक स्पेशल सॉन्ग है जिसके लिए मैं जेरी और ओलिवर को आमंत्रित करती हूँ। वो लोग हमारे बीच में आएंगे और वो अपना स्पेशल सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। Happy Sabbath, everyone. तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, 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 तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु, एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए, केनन की बाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे, तेरे कार्य आश्चर्य, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ जेरी और ओलिवर को बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग के लिए। उसका सॉन्ग के द्वारा इतना महिमा ईश्वर की बताई गई और वास्तव में ईश्वर के काम बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले हैं। हम सोच भी नहीं सकते जिनके बारे में ऐसे ईश्वर के द्वारा काम किए जाते हैं। इस समय मैं इनवाइट करना चाहूंगी बाइबल क्विज के लिए रायन किस्कू को, एबी को। आई वुड लाइक टू इनवाइट रायन फॉर बाइबल क्विज। Good evening, everyone. Let me just share my screen. So the code of the quiz is on the screen. You all can join on Kahoot.
Okay, we have 13 people. I think we'll start. This quiz is based on the on Numbers chapter 1, 2, and 3. Okay, so the first question is why did God tell Moses to number the Israelites to serve in the army so they would know how many children God has blessed with them altogether, or so people reading the Bible in the future would know the number? Yeah, the answer is to serve in the army. Um, Kenny is leading. Congratulations. Next question is which tribe had the most people? Reuben, Levi, or Judah? The answer is Judah. 8 people got that right. Now we have Jen leading. What did the number 603,550 represent? Total people in Israel, total people in Israel minus children, or total men aged 20 plus who were able to serve in the army? The answer is total men aged 20 plus who were able to serve in the army. 7 people got it right. Jen is still leading. Why was the tribe of Levi not counted? Because they already had a job to take care of the tabernacle, because Levi's father had cursed him, or because the men of the tribe of Levi were too weak to serve in the army? Yes, because they had a job to take care of the tabernacle. 7 people got that right. Now we have Stelz leading. What did God command each family of the tribe of Israel to camp around? A rock with the tribal name engraved in it, the family flag, or the tribal zodiac sign in the sky? Their family flag. Yes, 4 people got that right. Okay, Stelz is on a streak right now and is leading. When the tribes moved, which counted tribe was to go first? Judah, Levi, or Reuben? It's Judah. 4 people got that right. Stelz is still leading. Which tribe was to move last? Ephraim, Dan, or Manasseh? Yes, Dan is the correct answer. 5 people got that right. Stelz is still leading. Who was the father of Gershon, Kohath, and Merari? Aaron, Joshua, Levi, or none of the above? Yes, the answer is Levi. Stelz is still leading. Approximately how many men of Israel aged 20 and upward able to go to war left Egypt? 300,000, 600,000, 1 million, or 2 million? Answer is 600,000. 8 people got that right. Stelz is leading while Weirdo is on a streak. Which tribes camped south of the tabernacle? Dan, Asher, Naphtali,
Ephraim, Manasseh, and Benjamin, Joseph and Levi, or Reuben, Simon and Gad, Simeon and Gad? The answer is Reuben, Simeon, and Gad. 8 people got that right. Stells is still leading. Our last question. Which sons of Aaron continued as priests after their brothers died? Eleazar and Ithamar, Nadab and Abihu, Gershon and Kohath and Merari. Yes, it answers Elzar and Ithamar. 3 people got that right. The winners are the third place goes to Weirdo, the second place goes to Flo, and the first place goes to Stells. Yes. And the runners up are Jen and Shania. Thank you all for participating. We will prepare for the next quiz next week. Thank you. थैंक यू रायन, बहुत अच्छा क्वेश्चंस थे और बहुत डिफिकल्ट भी कहे जाते हैं क्योंकि नामों में बहुत कंफ्यूजन रहता है हम लोगों को याद करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा था, यही हम लोग को सीखना है बाइबल में और हमें पढ़ते रहने की जरूरत है। इस समय में हमारे आज के जो वक्ता हैं, स्पीकर हैं आज के, एलियो जीजा जी, उनको आमंत्रित करूंगी कि वो हमारे साथ प्रभु का वचन बांटे। Good evening, everyone. To begin, shall we pray? Our gracious God in heaven, Lord, we thank you for this Sabbath evening you have given to us. Lord, as we open your words, you open our hearts and minds too, so that whatever we hear, learn, we may keep it in our mind and follow it, so that we'll be able to prepare ourselves for your Son's second coming. And when he'll come, we all will join together to go to our eternal home to live forever. We pray in Jesus' name. Amen. This evening, I'm going to share a story from the Bible. It is a story of Jesus and a rich man. Okay, the man had encounter with Jesus, and this man was asking Jesus. Okay, what he was asking? He says, a man came to Jesus and asked, "Teacher, what good things must I do to have eternal life?" Rich man is asking Jesus how to get eternal life. Now, this man, when he was asking question, he used good things. Okay, good things. What good things I should do and you should do? That's not the question today. My question is not that, but there is something beyond, okay, good things. Now this man, as he was talking with Jesus, Jesus asked him, "Do you follow the 10 commandments?" The man answered, "Yes, I am following from my childhood. When I was small, maybe he said, my parents, they taught me about the 10 commandments, all the 10 important things God has given to human to live and prepare themselves for the eternal home." Man was very, confident, I should say. He was very confident, and he said that I followed. The word "follow" is important, very, very important. We are also following. Okay, so keep this one in, in mind somewhere. Keep this is important, because this will help us
to come to the conclusion. What to follow? How to follow? So this man, he was very happy, and Jesus was actually trying to come to the point, and Jesus said something to him that made him very sad. Okay, now what Jesus said to the rich man? Jesus said, you go, sell everything, whatever you have, and he said, you give to the poor and follow me. Now here, if I read, you'll understand. It says, Jesus replied, if you want to be perfect, again, the word perfect is important. Okay, the word perfect is very, very important in human life. Okay, as Christian. And if I go one step further, it is most important for Adventist. It says, if you want to be perfect, as an Adventist, if I want to be a perfect Adventist, okay, it says, go sell everything you own, give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Okay, now the turning point. He says, okay, then come and be my followers. As I said before, keep the word in mind. Follow. Who can be follower? Who is following? Jesus. You have to follow Jesus. It's not that, walking behind Jesus. You can say, it's sometimes we say our small children, follow me, and we try to tell them that you walk behind me. Okay, this following is different. When you follow, you have to follow the life of Jesus, what he has done, how he has done, to whom he has done. All these things comes to follow. Now I'm going to talk about two words. I'm not going to tell that whole story. Word number one, perfect, and word number two, follow or followers. Now, if you want to be perfect, okay, you don't need to do much, and I don't need to do much. I don't need to sell anything. I don't need to give everything. But there are some things we need to follow. Then we'll become followers. If I want to be perfect, I have to do something that will make me perfect. Now, what is that will make me perfect? If you want to be perfect, then you have to go to the book Galatians chapter number 5. If you have Bible, you can open with me. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Okay. If you want to be perfect, if I want to be perfect, I don't need to sell anything and give. Okay. Literally. But to follow, to be perfect, it says God's Spirit makes us loving. If you are loving, you'll be perfect. Happy. Only perfect person can be happy. Okay, peaceful. Okay, if you are peaceful, your life is a perfect life. Okay, patient. If you don't have patience, you are imperfect. So you have to have patience. I have to have patience. If I have patience, then I am perfect. Kind or kindness. Only kind people can be perfect. If you want to be perfect, if I want to be perfect, then I have to have kindness in my life. Good.
in some Bible it says when the rich man came, he addressed Jesus telling, "Good master." He knew that Jesus is a good man. So if you want to be perfect, if I want to be perfect, we have to be good. Only good people can be perfect. Faithful. We have to be faithful in every duties, every aspect of life, small or big, whether it has any, responsibility, no responsibility, for anything, very small also, we have to be faithful to that. Okay. Gentle. We have to be very gentle. Gentle, when if you are a gentleman, gentle person, we can call you as a perfect. And it's self-control. Okay, we have to have self-control to be perfect. Why? It says, okay, because it says there is no law against behaving in any of this way. So if you are perfect, there is no law to judge. We don't need to judge a perfect man. Okay, we don't need to judge a loving person. We don't need to judge a happy person. We don't need to judge someone peaceful. We don't need to judge someone patient, kind, gentle, good, and self-control. So if you want to be perfect, follow this method. These words can make anyone perfect. Galatians 5:22 and 23. Okay. Now, next word, if you and me want to have in our life, that we want to be follower of Jesus, we want to follow him, we want to walk in his footsteps. There is a way we can do it. Who was the first follower in the whole Bible? Someone was the first follower of God or God's people. Somebody followed. Okay, and followed very perfectly. This word will be useful there when we'll talk about the person who followed God's people. Okay, if you want to see the first, as far I have read from the Bible, okay, there was a follower of God's people. Okay, who was that? Anyone? Okay, it was Ruth. Ruth taught how to follow. Ruth taught how to be a follower of God's people or follower of God. Okay. If you see the story of Ruth, we know the story of Ruth. She was not from Jewish family or Jewish background. She was not from that. She came from heathen, and she was not willing to leave her mother-in-law. Today's world, most of the family, sometimes there is problem with daughter-in-law and mother-in-law. Okay, but for Ruth, it was completely opposite. She was so loving and friendly with her mother-in-law that she said, Ruth answered, "Please don't tell me to leave you." Okay. Ruth's mother-in-law was telling to go to her own home. Okay. But she said, "No, I don't want to go." See, follower. She was completely and she was so much submissive to her mother-in-law that she said, "I don't want to leave. Don't tell me to go." Further, she said,
that I don't want to go to my people. She says, I will go where you go. Okay, that is important. Okay, if I say I follow Jesus, so what I have to say, Jesus, I will go where you go. Then only I will become follower of Jesus. If I want to be follower of Jesus, then I have to tell this to Jesus, that I will go where you go. I will live where you live. So if I want to live in heaven, I have to follow Jesus, so that I can say that I will live where you live. So I want to say, Jesus, I want to live in heaven. Okay, so I will live where you live. Your people will be my people. Okay, if you want to be the follower of Jesus, if Jesus loves someone, you have to love that person. If Jesus loves someone, I have to love that person. Okay, that is how you can be. Okay, like you can say, Jesus, your people will be my people. That is how we have to follow. Your people will be my people. Your God will be my God. God in heaven, Jesus called him Father. So we have to call him Father. Father gave responsibility to Son. He came to this world. And always and all the time, most of every time, he is to address God as his Father. So we have to follow like him. Okay, when he says, your God will be my God. Ruth, she said to her mother-in-law that your God will be my God. Today we have to say, Jesus, Father in heaven, will be our God. I will die where you die. If you want to follow Jesus, you have to tell Jesus, the way you died, I want to die in the same way. That is how we have to follow Jesus. It is not that we have to die physically, but we have to feel somebody's pain. If somebody is in need, we have to feel his, okay, we have to put ourselves into his shoes and try to feel the pain the person is having. That's called dying. Okay, I will die where you die. He says, it continues, it says that and be buried beside you. Okay, Jesus died and he was buried. I want to die and I want to be buried beside Jesus. Okay, so it is very important to follow, but we need to know how to follow. Okay, it says, may the Lord punish me if we are ever separated, even by death. Okay, when you follow, even death should not separate us. Okay, Ruth said to her mother-in-law, even death should not separate us. If you follow Jesus, we have to tell Jesus, Jesus, even death cannot separate me from you. Okay, that is how a person is supposed to follow Jesus. Not like the rich man came and said, I want to be your follower. But when Jesus said that you sell everything and give to the poor, he felt so bad that he ran away. And after that, there is no in Bible, it's not mentioned that Jesus was talking about the rich man. Okay, so these two words, word number one, perfect, and word number two, follower, is important in Christian life. If I am a perfect person, I can represent God.
I can represent Jesus. If I'm imperfect, I cannot represent. And if I want to represent Jesus, then I have to have those fruit, which is mentioned in Galatians 5:22 and 23. Those words will make us perfect. Those words are so meaningful, so important in Christian life, especially Adventist life. This fruit is missing today from our life. Human became so impatient. In no time we get angry. If I want to be perfect, I should not get angry. Nobody should get angry. Nobody. Because Jesus, he never got angry. If we are having this, opposite words of loving, hatred, jealousy, then we are not his follower. We are not perfect. If we have jealousy in us, if we have hatred in us, we cannot follow Jesus. We cannot say we are perfect. We try to pretend that we are perfect, but we are not perfect. Only those fruit that God gave to human, loving, happy, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, self-control, these things can make us perfect. And if you want to follow Jesus, you have to follow like Ruth. She was so determined not to leave her mother-in-law. She decided she'll not leave. And Bible records, as long as she lived with her mother-in-law. If I say, Jesus, I want to be your follower, as long as we live on this earth, we have to follow him, we have to live with him, and we have to tell people also, same time, that we are following Jesus. If we have this character, the fruit of spirit in us, people will talk about. We don't need to preach. We need to just follow. If I follow and if I keep in me all these words, those good words, fruit of spirit, people will see Jesus in me. I don't need to preach. I need to keep in me. You need to keep in you those characters. Automatically, people will see. And when you walk down, people will say, "Oh, dekho, Isai ja raha hai." Because those words will make us the follower of Christ. Those words will make us perfect. So today we have learned about two things, perfect and followers. If you want to be a perfect person, have those characters which is mentioned in Galatians 5:22 and 23. If you want to be a good follower of Jesus, be like Ruth. And definitely, when Jesus will come on the clouds of heaven, he will call by your name and my name to come and join, to go to that eternal home we have. May God bless us. धन्यवाद देती हूँ मैं एलियो जीजा जी को। बहुत ही सुंदर वचन उनके द्वारा दिया गया और हमें बहुत जरूरी हो जाता है हमारे जीवन में, जबकि हम ईश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन से आत्मा के जो फल हमें बाइबल में दिखाई दिए हैं, जो हमें बता दिए गए हैं, उनको हमें जीना बहुत जरूरी है। हमें रोज हमें जीने की और सीखने की जरूरत है। ईश्वर के साथ उनके प्रेम में आगे बढ़ने की जरूरत है। जब हम एक मसीही जीवन जीते हैं, आत्मा के फल हमारे लिए बहुत विशेष है और इसे हम बाइबल से पाते हैं और रोज कोई ना कोई हमें सिखाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में एक उत्तमता के लिए, परफेक्शन के लिए काम करना है।
मैं धन्यवाद देती हूँ फिर से एलियो जीजा जी को सुंदर वचन के लिए। और इस समय मैं जॉर्ज को आमंत्रित करती हूँ, मिस्टर जॉर्ज हैम्ब्रम, वो हमारे सामने एक गाना प्रस्तुत करेंगे, स्पेशल सॉन्ग। Good evening and happy Sabbath to everybody. सबको हैप्पी साबत। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोग के सामने एक गीत प्रस्तुत कर सकता हूँ। और ये गीत जो है इंग्लिश में है। The song which I'm going to sing is in English, and this is a very old song by Booth Brothers, Castles in the Sand. Those of you know this song can hum along with me. Like a child by the seashore, building castles in the sand, foolish dreams I have seen day by day, leaving God out completely, till the day my castle's grand fell apart in the tide swept away. In each life, storms will gather, rains descend and wild winds flow. Wise the man who in God is anchored fast. Are you then like the wise men? Are you anchored? Do you know you are safe till the storms of life have passed? Castles built upon the sand, though they seem to be so grand, will surely melt away. For in life raging storm they cannot stand. In the rock of the ages, all my hopes are built today, and in the rock they will never pass away. Castles built upon the sand, though they feel so grand, will surely melt away. For in life raging storm they cannot stand. In the rock of the ages, all my hopes are built today, and in the rock they will never pass away. And in the rock they will never pass away. Thank you. इस समय हम लोग अपना वेस्पर मीटिंग को अंत करने के लिए आमंत्रित करेंगे मिसेस मिरियम किस्कू को। वो हम लोग के सामने है। और मिरियम आंटी, आपको मैं प्रार्थना के लिए ओके, आइए हम लोग सब अपना सिर को झुकाते हैं और हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, तो हमारे साथ सप्ताह भर था और इस सुंदर साबत की शुरुआत में आपने अपने बच्चों को आपके पास इकट्ठे किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो आपने इस आज के शाम की अवस्था में आपने बहुत सुंदर वचन आपके बच्चे के द्वारा जो आपने सुना है कि कैसे हम लोग आपके पास आ सके और कैसे हम लोग एक परफेक्ट और फॉलोअर्स, गुड फॉलोअर्स बन सके। परमेश्वर पिता, आपके बिना हम लोग कुछ नहीं है और कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम जितने भी आपके पास आए हुए हैं, आपके वचन को सुने हैं, आपके इस जो आपने हमें लिंक दिया है परमेश्वर पिता, इसको हम लोग अच्छा से यूज कर सक रहे हैं। और इसके द्वारा परमेश्वर पिता, आपके वचन जो यहाँ दूर दूर में जो कोई है आपके बच्चेगण, उन सब के पास सुंदर वचन जो आपने
आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग को सब को भरपूर किया है। परमेश्वर पिता, जो आपने हमें सुनाए और सिखाए कि कैसे आपके पास हम आ सके और कैसे हम अच्छा गुड फॉलोअर्स बन सके। परमेश्वर पिता, हम एक एक को आशीष दे ताकि हम आपके पास रह सके और आपके वचन को हम लोग सुन के अपने मनों में रह सके और आपके वचन के जैसे हम अपने पाँव को आगे बढ़ाए और एक अच्छा नमूना दिखा सके। जो कोई अंधेरा में है, जो आपके वचन को अभी तक सुने नहीं है, जानते नहीं है, हे परमेश्वर पिता, उनके लिए हम एक अच्छा ज्योति बन सके और जो कि आपके वचन को हमारे द्वारा उन्हें देखे और समझे कि आपने हमें आशीष दिया है। परमेश्वर पिता, हम अभी याद करते हैं जितने कोई जो बीमार तकलीफ में पीड़ित है, उन सबको याद करते हैं परमेश्वर पिता। जो कोई तकलीफ में है और जो कोई दवा खाते हैं, परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथ को आगे बढ़ा और इस दवा पर छू और उनको चंगा कर। और हमारे बीच में जितना भी भाई बहन है, परमेश्वर पिता उन सबको आशीष दे। विशेष करके हम जो तकलीफ में है उनको याद करते हैं। और परमेश्वर पिता क्या मांगे इस रात्रि के समय आपके अपने आप को हम लोग सौंपित करते हैं। हमारे घर के चारों ओर स्वर्ग भेज और हमें सुनिंद्रा दे और कल हम नए दिन को देख सके, नया साबित दिन को देख सके और जो कल हमारे लिए एक नया दिन का नया आशीष जो आपने हमारे लिए जो रखे हैं वो सब हम प्राप्त कर सके। परमेश्वर पिता, और क्या मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। इस छोटी विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनत कबूल कर, आमीन। I know there's no way to repay you, only to